In 1934, Majlis Ihrar started a widespread agitation against Jamaat Ahmadiyyah and declared that they would not rest until they had wiped Ahmadiyyat off the face of the earth. In response, Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu said, "I see the earth slipping from under the feet of Ahrar. They say they will wipe out this Jamaat, but Allah Almighty has told me of a plan with which the Jamaat will spread in all countries of the world, and no one will be able to destroy it." ये वो दिन थे, बहुत इर्तियाश था फिजाओं में। अहमदियों की तबीयत में भी हिजाम था और जोश था और एक वलवला था। जितनी कुव्वत के साथ जमात को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उतने ही जोर के साथ ये जमात उछलने के लिए तैयार बैठी थी। एक आवाज का इंतजार था, यानी खलीफतुल मसीह की आवाज का, कि वो जिस तरह चाहें, जिस तरफ चाहें कुर्बानियों के लिए बुलाएं, लेकिन दिल सीनों में उछल रहे थे कि कब यह आवाज बुलंद हो और कब हमें आगे बढ़कर नानो अंसारुल्लाह कहने की तौफीक अता हो। 1934 में हजरत मुस्लिम माऊद ने इस तहरीक का आगाज फरमाया। ए आसमानी बादशाह के मौसीकारों, एक दफा फिर इस नौबत को जोर से बचाओ कि दुनिया के कान फट जाएं। एक दफा फिर अपने दिल के खून इस करना में भर दो कि अर्श के पाए भी लरज जाएं और फरिश्ते भी कांप उठें, ताकि तुम्हारी दर्दनाक आवाजों और तुम्हारे नारे तकबीर और तुम्हारे नारे तशहीद शहादत तौहीद की वजह से खुदा ताला आसमान से जमीन पर आ जाए और फिर खुदा की बादशाह जमीन पर कायम हो। इसी गरज के लिए मैंने तहरीक जदीद को जारी किया है। Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu presented 27 demands, which bears witness to his profound knowledge and wisdom. He himself has explained the significance of the demands. He says, "These are the demands I want to present before the Jamaat. Each one of them has been selected after long deliberation. There is not a single one of them that will not be useful in the progress of Jamaat. Each one of them is like a seed that is deemed to grow enormously, turn into a robust tree, and the one that will overpower the enemies. There is none out of them that could be disregarded. There is none without which the structure of our progress can reach completion." Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu launched a scheme to stop the attacks of the opponents and to spread Islam in the world. It was certainly supported by the wise and the mighty God, and was filled with profound wisdom. During the first 10 years, from 1934 to 1944, 5,000 people joined the financial scheme and were termed as the Mujahideen of First Daftar. With regards to them, Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu stated, "Those who would continue to take part are the ones who would fulfill the vision of the promised Messiah, peace be upon him, that Allah Almighty showed him in 1891, in which it was revealed that 5,000 soldiers would be given." The Tahrik Jadid was a revolutionary movement which laid a solid foundation for establishing the unity of God and the propagation of Islam throughout the world. Once the opponents had declared to limit the spread of Jamaat within the confines of Qadian, but today, by the grace of Allah, the pure and humble sacrifices of lives and wealth by the members of Ahmadiyya community have enabled the voice from the hamlet of Qadian to reach more than 200 countries, and a robust system for spreading the true teachings of Islam has come into being. अहमदियों की अक्सरियत इस बात का इदराक रखती है कि यह ज़माना जो तकमील इशाअत इस्लाम का ज़माना है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को भेजा है, जो कि कुरान करीम की इशाअत और तर्जुमे के ज़रिए से हो रहा है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब की इशाअत और जमात के लिटरेचर के ज़रिए से हो रहा है, मसाजिद की तामीर के ज़रिए से हो रहा है, मिशन हाउसेस के क़याम के ज़रिए से हो रहा है, जामियात के क़याम के ज़रिए से हो रहा है। इस वक्त एशिया में भी, अफ्रीका में भी, यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, इंडोनेशिया में भी
جامعات کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جہاں سے مربیان اور مبلغین فارغ ہو کر تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں احمدی کو علم میں آتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، اور پھر وہ مالی قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مخلوق کی ہمدردی بھی جزو ایمان ہے۔ اس ہمدردی کے تحت ہسپتالوں، اسکولوں کا قیام اور اس کے علاوہ بھی امداد کا نظام ہے جماعت میں، یہ سارا کچھ بھی مخلصین کی قربانیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہے جنہیں کہ وہ ان کی قربانیوں کو اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور اگلے جان میں بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ In the beginning, only a few companions used to travel abroad to spread the message of Islam Ahmadiyyat, where they had to face severe financial difficulties. They would arrange for their own provisions, and despite that, they would still make financial sacrifices for the cause. اب وہ مشکل حالات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ پہلے ہمارے مبلغین اور ڈاکٹروں کو تو اتنی تکلیفوں میں وقت گزارنا پڑا ہے اور ایسے ایسے مذاہب کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ان کی داستان آپ سنیں تو آپ کے دل دہل جائیں۔ بعض ہمارے مبلغین کو اس طرح وہاں خدمت سر انجام دینی پڑی ہے کہ مسلسل کئی سال تک سوائے روٹی اور نمک مرچ کے اور کوئی سالن نصیب نہیں ہوا، دودھ نصیب نہیں ہوا، کوئی اور نعمت نہیں ملی۔ اسی پر انہوں نے بعض دفعہ مسلسل کئی سال گزارے کیے، یہ پرانے وقتوں کی میں باتیں بتا رہا ہوں۔ اور احمدی ڈاکٹروں نے بھی بڑی بڑی مشکل حالات میں وہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور خدا کے فضل سے ایک احمدی اسپتالوں کے وقار قائم کیا ہے۔ تو اب ان عظیم الشان راہوں پر جو آپ کے لیے کشادہ کی جا چکی ہیں، ان پر آگے قدم بڑھائیں اور خدمت سے حصے لیں، تاکہ آئندہ نسلیں پھر آپ کے نام کو عظمت اور محبت سے یاد کریں اور آپ کے لیے دعائیں کریں، جس طرح ہم ان پچھلی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ At present, hundreds of missionaries are serving in foreign countries through Tahrik Jadida, the divine scheme. From the foundation of Jamaat to the present day, a comprehensive system of schools and hospitals has been established under Tahrik Jadida. There are more than 600 primary and secondary schools engaged in providing education as well as the moral training to become loyal and useful citizens. By the grace of God Almighty, this work continues to expand day by day, and it has spread all across the African continent. In the field of healthcare, the Jamaat is serving humanity under the scheme of Majlis Nusrat Jahan. A far-reaching system of hospitals has been established. By the grace of the Almighty, the Jamaat is currently operating 37 medical institutions in 13 countries to serve humanity, where both international and local doctors are employed. There are 11 jamias around the world, training missionaries under the direct supervision of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. Moreover, the missionaries, after graduating from Jamia Ahmadiya, are provided higher education in different fields of study, such as English, Persian, Arabic, Urdu, and Spanish languages, along with archaeology and journalism. They train in different languages and various other subjects to help translate the literature of the community into different languages. The Holy Quran has been published in more than 70 languages. Translations of books regarding the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him's biography, and hadith, as well as the writings of the promised Messiah, on whom be peace, have been published in numerous languages. Various desks have been set up for the translation of these books, such as English, Swahili, Persian, Arabic, and Japanese desk. In accordance with the instructions of Hazur Anwar, may Allah be his helper, a refresher course of 1 to 3 months every year is conducted for the graduated missionaries from Jamia Ahmadiyya Canada, Germany, Ghana, United Kingdom, Uganda, and Indonesia. So far, nearly 300 missionaries from foreign jamias have benefited from this course. In addition,
There is a mutakhassisin department dedicated for those who are chosen for gaining in-depth knowledge in certain subjects, like Tafsir al-Quran, Hadith, theology, jurisprudence, history and biographies, and comparative religious study, etc. This course spans up to 5 years. Today, the Jamaat is reaping the fruits of the great sacrifices by our forefathers. Millions of righteous souls are entering into the fold of the Ahmadiyya Muslim community, and God's promise to the promised Messiah, on whom be peace, that I shall cause thy message to reach the corners of the earth, is being fulfilled every day with grandeur. Now, the Ahmadiyya Muslim community has been established in more than 200 countries of the world. 1934 में इसकी इब्तिदा हुई, फिर ये अपनी इब्तिदा से तरक्की करते हुए इसने बढ़ना शुरू किया और फैलना शुरू किया, और दुनिया इस बात को नहीं समझती, इतराज़ करने के लिए तैयार हो जाती कि अल्लाह ताला ने हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस मंसूबा के नतीजा में लाखों ईसाई और मुशरिकीन को हल्का वजह से इस्लाम करने की तौफीक पाई। लाखों, एक या दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, सिर्फ अफ्रीका में ही लाखों ईसाई और मुशरिक मुसलमान हुए। People are not only entering in the fold of Ahmadiyyat, but also by the grace of God, they are becoming an active and strong part of the community. They continue to partake in the system of financial sacrifice as well as the institution of wasiyat. Moreover, in accordance to their age groups, they continue to be part of the auxiliary organizations and devote their time and wealth under the instruction of their respective organization. मुझे याद है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक दिन मियाँ रूड़े खां जो बहुत ही ज़्यादा साहब मुकर्रम थे और तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, फिर वो उस ज़माने में कपूरथले में थे, वो बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। शुरू में नायब तहसीलदार जब लगता था तो 15 रुपये तनख्वाह होती थी, तो वो हमेशा हर इतवार को कादियाँ आ जाते थे और आके कोई 1 रुपया 2 रुपये नजराना सबको देते थे। कहने लगे हज साहब वफ़ात के बाद आए, उस वक्त वो तहसीलदार हो गए थे और तनख्वाहें भी ज़्यादा कर दी गई थी, जो 3 या 4 अशरफियाँ उनके हाथ में पड़ी। आके उन्होंने मेरे हाथ में दी वो अशरफियाँ और चीखे मार कर रोने लगे। मैं हैरान हुआ कि ये रोते क्यों। फिर मुझे ख्याल आया शायद ये गरीब आदमी है, इनको अशरफियों का दर्द हुआ है। फिर मगर रोते रोते थोड़ी देर में ज़रा होश आई तो कहने लगे सारी उम्र ख्वाहिश रही कि मैं उन्होंने हद विच सोना रख, पर कभी तौफीक नहीं मिलती। जदों कुछ पैसे जमा होंगे सन मैं पैदल बाज़ार चल के कपूरथले तो आ जाता था देखने वाला, या रेल में आंदा था किराया लगता। तो जदों सोना मिले तो हुण वो है नहीं। खैर वो ऐसा दर्दनाक फिक्रा था कि मुझको भी रिकत आ गई, मगर उनको चुप कराने के लिए मैंने उनको कुछ तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनकी जो मजबूर हरकत थी उसको देखते हुए दरअसल मेरी कोशिश बिल्कुल बेकार और बेसूस सी थी। ये फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, यानी उनके मालों में हक़ रखा जाता है साइल और महरूम के लिए। Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu once said that the institution of Tahrik Jadid is a forerunner to Nizam-e-Wasiyat, which means that Tahrik Jadid will help strengthen Nizam-e-Wasiyat, and it will become the basis for people to get used to make financial sacrifices. It will be like a precursor or herald that will announce the coming of a great institution behind it, which will be called
Nizam-e-Wasiyat. Thousands of mosques have been established to spread the message of one God all over the globe. Hundreds of mission houses are working for the propagation of Islam, the voice and message of the worldwide head of the Ahmediyya Muslim community is reaching to millions of thirsty souls to MTA International. One of the fundamental demands of Tahrik Jadid is to devote life for the cause of Islam. At present, the total number of Waqfin is more than 70,000 in 128 countries. The largest number of Waqfin are in Pakistan, that are around 30,000, followed by Germany, UK, and Canada. Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah alayh, started the Waqfin scheme under divine guidance, and now the Jamaat is reaping its fruits in abundance during the blessed era of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. Experts of various fields of life from all over the world are offering themselves for the service of Islam Ahmadiyyat. Furthermore, the worldwide visits of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, has enabled people of far and wide nations to understand Islam better, and the fears in their hearts and minds about Islam have subsided. کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے جو تحریک مخالفین کے حملوں کو روکنے اور دنیا میں تبلیغ اسلام کے لیے جاری کی تھی، جو یقیناً اس حکیم اور عزیز خدا سے تائید یافتہ تھی اور بڑی حکمت سے پر تھی، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت نے دنیا میں پھیلنا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہے، جس کے تائید یافتہ ہونے کا ثبوت ہم دنیا میں پھیلے ہوئے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، تو دنیا میں پھیلے ہوئے جماعت کے مشن ہیں، مساجد ہیں، اور پھر ہر سال جو سعید روحیں جماعت میں شامل ہوتی ہیں، ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ In short, the following words of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu will suffice to understand the true purpose of this divine movement, Tahrik Jadid. The purpose of launching Tahrik Jadid is to acquire such funds with which Allah's message can be delivered as far as the ends of the earth with ease and facility.